गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, ये सारे एक ही है. अगर एक ही है तो डिफरेंट शब्द क्यों है? इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, good and bad, then only you come to know difference between ethics, moral and morality. Moral. Moral is nothing but anyone's behavior or conduct. Anyone's behavior or the conduct being evaluated, then this evaluated conduct is called the moral. कैसे evaluate करेंगे? The evaluation would be in terms of good or bad. समझ में आया? Take for example, मान लो आपका स्कूल में, आपको सबको पता है, कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट मिलता है. तो कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट पे गुड लिखते हैं, राइट लिखते हैं. कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट के ऊपर गुड लिखा जाता है. आर यू गेटिंग? अब आ जाओ मोरालिटी. मोरालिटी इज नथिंग बट it is a conduct of an individual if that conduct been accepted or sanctioned, then these accepted conduct called the morality. अब कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो conduct क्या होगा? That conduct become as a right conduct. अगर किसी भी कॉन्डक्ट को सैंक्शन इंपोज किया, दैट मीन्स व्हाट? दैट पर्टिकुलर कॉन्डक्ट इज रॉन्ग कॉन्डक्ट. फॉर एग्जांपल टेक, यहाँ पे जो बुर्का, मिडिल एशियन कंट्रीज, क्या हो रहा है? वहां पे अगर बुर्का नहीं पहनेगा तो सैंक्शन विल बी इंपोज्ड. व्हाई सैंक्शन इंपोज्ड? नॉट वेयरिंग बुर्का इज रॉन्ग कॉन्डक्ट, दैट्स व्हाई दे इंपोज्ड द सैंक्शंस. और इट विल टेल यू द नेचर ऑफ द कॉन्डक्ट. That means what? It is good or bad conduct or right or wrong conduct. The nature of the particular conduct will be specified through the concept of morals and morality. थोड़ा ज़्यादा complicated हो गया और simple language में बोलना है. It is at the generic level or the general level morals will be evaluated based on the good or bad. राइट? सत्संग में जाते हो तो वहां पे किस चीज का जिक्र ज्यादा होता है? इस चीज का जिक्र ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि दैट बीन डिस्कस्ड एट द जनरल लेवल. जैसे मैंने आपको दिया है स्कूल सर्टिफिकेट, ये क्या है? ये भी एट जनरल लेवल. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो कोई गलती नहीं किया है क्या? कोई स्टूडेंट स्कूल में गलती किया है, लेकिन एट द जनरल लेवल उसको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है. राइट? अब ये जो मोरालिटी है, दिस इज द पर्टिकुलर और इंडिविजुअल. अगर ये इंडिविजुअल हो गया, ये क्या हो गया? ये ग्रुप लेवल और द कम्युनिटी लेवल. ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे इस चीज से इवॉल्वेट किया जाता है कंडक्ट को. इंडिविजुअल बिहेवियर को, कंडक्ट को मोरालिटी के थ्रू इसको एक्सेप्ट किया जाता है. इज इट क्लियर? अब आ जाओ एथिक्स. एथिक्स क्या है? एथिक्स इज नथिंग बट, इधर देखो, किसी भी कंडक्ट को गुड और बैड बताना है. दैट मीन्स यू आर कैटेगराइजिंग इनटू द मोरल डोमेन. राइट और रॉन्ग में क्लासिफाई करके उसको एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी में नहीं करना है. दैट विल बी कमिंग इनटू द मोरालिटी डोमेन. दैट मीन्स on what basis this particular conduct will be evaluated or been labeled as a good and bad will be decided by the ethics. On what ground particular conduct been labeled as a good, that basis will be finding by the ethics. Are you getting? So this is what you are finding the philosophical investigation. It is the philosophical investigation of finding the
basis of evaluation of the conduct or the accepted or sanctioned conduct. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया और सिंपल करना है, और सिंपली देखो, फाइंडिंग द बेसिस ऑफ good and bad conduct and right and wrong conduct is called the ethics, right? So this is not about what is good or bad, that is not the domain of ethics. Ethics domain is finding on what grounds particular conduct been labeled as a good and bad. Finding that ground is the work of the ethics, while good or bad is the domain of morals. At the same time, right and wrong is the domain of morality. अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं पता चलेगा तो केस स्टडी में आप तो रायता बनाओगे जैसे अभी बना रहे हो. आर गेटिंग? रायता नहीं बनाना है. देयर इज ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन है. पहले इसको समझोगे तब जाके आपको इस केस स्टडी में इसका इंप्लीमेंटेशन, मतलब इसका कैसे अप्लाई करना है, समझ में आएगा. इज इट क्लियर?